Assalamu alaikum people. Today we will talk about direct speech versus indirect speech. It is sometimes also called as direct narration versus indirect narration. Let's see what is narration. It is the act of reporting words of a speaker, यानी बोलने वाले के अल्फाज को किस तरह रिपोर्ट या कन्वे किया जा रहा है उसका तरीका नरेशन कहलाता है. रिपोर्टिंग के 2 ways हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. Let's see each one of them in detail. What is direct speech? The actual words of a speaker are quoted as it is. The exact same words of the speaker are enclosed in inverted commas. इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अलीम पढ़ रहा है और इस दौरान उसका फ्रेंड साथ आता है. एंड ही आस्क्ड अलीम, व्हाट आर यू डूइंग? अलीम रिप्लाइड, आई एम स्टडिंग. अगर साद से पूछा जाए कि अलीम क्या कर रहा है एंड साद रिप्लाइड एज अलीम सेड आई एम स्टडिंग, देन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट स्पीच. इस एग्जाम्पल में जो रिस्पॉन्स है आई एम स्टडिंग वो रिपोर्टेड स्पीच है और सेड रिपोर्टेड वर्ब है. लेट्स सी व्हाट इज़ एन इनडायरेक्ट स्पीच. द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर आर ट्रांसफॉर्म्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच. दे आर सेड और रिटन इन अ सिंपल लैंग्वेज. इस स्पीच में बोलने वाले के हकीकी अल्फाज को तब्दील कर लिया जाता है. बट वाई डू वी नीड इट? वी नीड इट टू अवॉइड कन्फ्यूजन वाइल यूजिंग डायरेक्ट स्पीच वाइल रिपोर्टिंग. डायरेक्ट स्पीच वाली एग्जाम्पल लेते हैं और उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं. इन डायरेक्ट स्पीच अलीम सेड आई एम स्टडिंग, वाइल कन्वर्टिंग इट विल बिकम अलीम सेड दैट ही वॉज स्टडिंग. कन्वर्जन के दौरान फॉलोइंग चेंजेस आए हैं. वी डिडंट यूज़ इन्वर्टेड कॉमास. सेकेंडली, देयर वाज अ चेंज ऑफ टेंस. प्रेजेंट बिकेम द पास्ट टेंस. एंड थर्ड इज़ द यूज़ ऑफ कंजंक्शन दैट. That was all about the concept of direct indirect. Don't forget to subscribe our channel and scan the QR code for latest videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.